हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, Assalamu alaikum, grade 9 students. Today we will learn scientific approach in chemistry. What is scientific approach in chemistry? As we know this thing that science has developed through a series of discoveries which started off as observed natural phenomenon which had to be explained. So all those discoveries which are made in the field of science needs a way to be explained and needs a method to be verified. So that method by which the method that we use to explain the natural processes and the discoveries is called the scientific method. साइंटिफिक मेथड एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए साइंस की फील्ड में होने वाली जितनी भी डिस्कवरीज हैं उनको परखा जाता है और इन स्टेप्स के बाद ही वो साइंस की फील्ड में जो डिस्कवरी है उसको वेरीफाई करते हैं साइंटिस्ट्स और उसको हकीकत माना जाता है. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ इन द साइंटिफिक मेथड is observation. Second is hypothesis, and third is theory, and the last final step is scientific law. So we will learn one by one what is an observation. Actually, observation word means mushahada. What is observation? When you observe, you become aware of something using one of your senses. And which are your senses? You know very well: smell, taste, sight, touch and sound. And in observation, you simply describe something as it appears. एंड ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ फैक्ट. स्टूडेंट्स, और हर एक की जो ऑब्जर्वेशन होती है इट डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. द ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट. सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू डिस्कस टू फाइंड ऑफ एनी साइंटिफिक अप्रोच in chemistry or science. So let's take example here. For example, teacher says to students that leaf is green in color. Now students, what they will do, first of all they need an observation. They have to observe first that what teacher is saying, is it right or wrong. So students will see the leaf first of all and then they will believe that what teacher says is right or wrong. So when teacher will bring the leaf and she will show that to students, and students will see that yes, teacher says right, it is green in color, and they will observe its green color. That is called observation. So the next step that is very important in the field of science is hypothesis. We call hypothesis in Urdu mafruza. Mafruza, what it is a tentative testable explanation for observations. When you explain observations, when you show students multiple leaves which are green in color and they believe on it, it becomes meaningful. That is called hypothesis, but still it is a trial idea that can be modified. So what is hypothesis? Hypothesis is useless unless it is supported by data. So what it means? It means hypothesis is meaningless unless there are data to support it. So after hypothesis you need an experiment to test a hypothesis. So now students have believed this thing that yes, leaves are green in color. So you give a trial idea that leaves are green in color. You have given a statement, it is called hypothesis, but still it's not sure that leaves are green, and if they are green, why they are green. So that is the hypothesis. Now the third step is theory. What is theory? Theory is group of verified hypotheses about certain aspects of the natural world. Theories may change as scientists learn more about the topic. The examples of theories are given: theory of evolution, theory of Big Bang, and the theory of plate tectonics. Students, actually a good theory predicts new facts and also it unravels new relationship between naturally occurring phenomena. For example, the theory is supported by different types of observations and experiments, then it becomes a theory, and theory is an acceptable idea or principle. Okay, so let's take example here. Students, they have believed this thing that leaves are green in color and they know this thing. Now they need an explanation, that further new fact that why leaves are green in color. So teacher
has told them that leaves are green in color due to chlorophyll. So students have believed on this thing that leaves are green in color due to chlorophyll, because all those plants and all those leaves which contains chlorophyll are really green in color. So it is an acceptable idea. So students need further explanation, further proof of it. So the further proof is called the law or the scientific law. What is scientific law? Something that has been tested over and over again and has not been contradicted, that is called law. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन्स लॉ मीन्स जब किसी भी थ्योरी को या किसी भी चीज़ को बार बार टेस्ट किया जाए और वो सभी फैक्ट्स और जो सभी प्रिडिक्शंस हैं उनके ऊपर पूरा उतरे, बिल्कुल दुरुस्त साबित हो, उसे कहा जाता है साइंटिफिक लॉ. फॉर एग्जाम्पल आपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक तो बता दिया दैट लीव्स आर ग्रीन इन कलर और दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल. देन स्टूडेंट्स दे विल आस्क दैट व्हाट इज द प्रूफ, वेयर इज द क्लोरोफिल. तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों को कहेंगे कि कागज़ लें, उसके ऊपर उसी लीफ के साइज़ का लीफ बनाएं पेन के साथ, और फिर आप बच्चों को कहेंगे कि लीव्स को फोल्ड करें, उस जो लीफ आपके पास है उसको फोल्ड करें, सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, जितनी बार आप उसको फोल्ड कर सकते हैं उसको फोल्ड करें. फिर आप उस लीफ को पूरी फोर्स के साथ उस पेपर के ऊपर रगड़िए जहाँ पर आपने ड्रॉ किया है लीफ. तो आप देखेंगे जो आपका ड्रॉड लीफ है वो पूरा अंदर से ग्रीन हो जाएगा. उस लीफ से क्या चीज़ निकलेगी, ग्रीन पिगमेंट, जो कलर देगा पेपर को, और उस ग्रीन पिगमेंट को ही कहा जाता है क्लोरोफिल. तो अब आपकी जो थ्योरी है उसको टेस्ट हो गई है और अब ये प्रूफ हो चुका है दैट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. दैट इज कॉल्ड द लॉ. सो दीज आर द 4 स्टेप्स विच आर नोन एज द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री. किसी भी नेचुरल फेनोमेना या किसी भी डिस्कवरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें साइंस में 4 स्टेप्स की ज़रूरत होती है. नंबर फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज़ हाइपोथेसिस, थर्ड इज़ थ्योरी एंड द लास्ट एंड द फाइनल इज़ साइंटिफिक लॉ. और जब कोई भी चीज़ इन सभी चीज़ों में से गुजर के ही लॉ बनती है और एक फैक्ट और एक वैलिड प्रिडिक्शन बनती है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन लॉज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस topic today. Inshallah in next class we will learn the chapter number 2, but I will assign you homework. What you have to do, you have to fill the blanks in textbook